Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is lecture 4. In it we will start unit 5. First of all we will complete the poems, then we will start unit 4. We have done first 3 units. Now this is unit 5. The Rain. It's a poem. It's written by W.H. Davis. Students, hold up your pen and ready your loose sheets. Write down about the poet. This poem is written by W.H. Davis. Students, W.H. Davis' favorite themes are nature and the hardship of the poor. This poem is also about the hardship of the poor. First of all, you have to write the central idea of the rain. Then I will also make you write the central idea of try again, which we missed last lecture. First of all, write down the central idea of the rain. Note down. The central idea of the poem. Students, you have to cut these lines. The central idea of the poem is nature and the hardship of the poor. You have to write the question, what is the central idea of the poem The Rain? Then you write first line, the central idea of the poem is nature and the hardship of the poor. This poem also has a symbolic meaning. The upper leaves get the raindrops and quench their thirst. Afterwards, they pass on the drops to the lower leaves. This metaphor, ये अलामत है, means इसका मतलब है that the rich गेट गोल्डन चांस, अमीरों को या ऊपर वाले पत्तों को ज़्यादा चांस मिलता है फर्स्ट पहले, एंड वट एवर रिमेन जो बच जाता है ट्रिकल डाउन नीचे गिरता है टू द पुअर पीपल गरीबों के पास. बट द पोइट होप्स दैट, लेकिन शायर उम्मीद दिलाता है देता है देयर वुड बी इक्वलिटी इन द सोसाइटी के माशरे में बराबरी होनी चाहिए, जस्ट लाइक द सनशाइन जैसे कि सूरज की रोशनी होती है, विच स्प्रेड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इक्वली जो तमाम दुनिया पर बराबर चमकती है फैलती. दिस सनशाइन इज़ अ बोथ फॉर द डार्क एंड राउंड ड्रॉप ऑफ रेन एंड रिच ग्रीन लीव. ये सूरज की रोशनी होती है गहरे गोल कतरों के लिए और ऊपर वाले ग्रीन पत्तों के लिए. सो अमीरों के लिए और गरीबों के लिए. सो दिस वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रेन. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पोएम. रिच, sight, shines, bright, comes out, wondrous. So rich means fertile, sight seen, shines, glows, bright shining, come out, appears, wondrous, strange. So let's start the poem. I hear leaves drinking rain. मैं सुनता हूँ लीव्स ड्रिंकिंग रेन, पत्ते पानी पी रहे हैं बारिश का. आई हेयर रिच लीव्स ऑन द टॉप. मैं ऊपर वाले पत्तों की बात कर रहा हूँ. द पोएट नेम द टॉप लीव्स एज अ रिच लीव्स, के ऊपर वाले पत्तों को सुन रहा हूँ. गिविंग द पुअर बीनी, जो दे रहे हैं नीचे वालों को. ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, कचरे के बाद कचरा. टिस्ट, दैट इज़ अ स्वीट नॉइज टू हियर, ये मीठा शोर है सुनने के लिए. दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, ग्रीन पत्ते, सबज हरे पत्ते करीब ही पी रहे हैं, करीब ही. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलता है आता है. आफ्टर दिस रेन, इस बारिश के बाद. शेल स्टॉप, जो कि रुक जाएगी. अ वंडरस लाइट विल फिल, और एक वंडरस लाइट जो स्ट्रेंज अजीब रोशनी है वो फिल हो जाएगी. ईच डार्क राउंड ड्रॉप, नाउ ईच डार्क राउंड ड्रॉप मीन बारिश के गहरे कतरे. आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, कि सूरज चमकेगा उम्दगी से. इट विल बी अ लवली साइट, वो देखने के लिए बहुत अच्छा नज़ारा होगा. स्टूडेंट्स, इन इट्स पोइट हैड डिस्कस्ड अबाउट द lower leaves and top leaves. His phenomena is that the rain is coming first to top leaves, and then the remaining water is for poor leaves, top or beneath leaves, top or poor leaves, rich and poor people. So this is the central idea. This is the theme of the poem. Student, let's start the question answers.
of the poem. So, first of all, you will notice that for the question answers. So, what does the poet hear? शायर क्या सुनता है? The poet hears the sound of raindrops falling on the leaves. शायर सुनता है sound drops of the dropping drops falling on the leaves. जो पत्तों पर गिर रहे हैं कतरे. What according to the poet is a sweet noise? According to the poet, the sound of raindrops falling on the leaves is a sweet noise. शायर के मुताबिक बारिश के कतरों की आवाज़ जो कि गिर रहे हैं पत्तों पर इज़ अ स्वीट नॉइस, मीठी आवाज़ है. What will happen after the rain stop? After the rain stop, a lovely and charming light will fill each dark place. How does sun come out after the rain? After the rain, the sun breaks through the clouds. वो बादलों से निकलेगा सूरज. It means it shines bright. वो चमकेगा बहुत रोशन. So this was the poem, and now the rest of the question we have to finish. How does the light fill the drops? How does कैसे करती है the light रोशनी fill the drops कतरों को fill? After the rain, बारिश के बाद sun shines bright, सूरज चमकेगा रोशन. The sun shines fills, सूरज चमकता है. fill और सूरज की रोशनी fill कर देगी every drop, हर कतरे को with light रोशनी से. Every drop begins to shine, हर कतरा चमकेगा in the rays, शुआओं में. What makes the scene lovely? क्या चीज़ सीन को lovely करती है? After the rain, बारिश के बाद when the sun shines, जब सूरज चमकता है brightly ज़्यादा, it makes the scene, ये बनाता है सीन को lovely, बहुत प्यारा. So, student, this was your unit 5 poem. We have done question answers, central idea. Students, for the last uh, chapter, we missed the central idea of try again. Let's finish that. So hold up your pen and be ready for your question answers. So we missed, hold up your pen, note down the central idea which is mentioned on page number 29. Try again. What is the central idea of try again? Write down the question. The central idea of try again is try again. The poet says that when the word says give up, hope whispers, try it one more time. The road to success is dotted with many tempting parking places, मुश्किल चीज़ों से घिरी हुई है. So you should keep up trying again and again to cross this road. So students, this is the central idea of try again. That is mentioned on page 29. You have to skip line number first line and note it down, central idea, because in your exam 3 नंबर का central idea आता है. So students, we have done unit 1, unit 3, unit 4 and unit 5. So inshallah, see you in next lecture. And exercise of unit 5 you have to solve by your own. Okay, this is your task. Allah Hafiz. See you next time.